The 17th round of the India-China Corps Commander level meeting was held at the Chushul-Moldo border meeting point on the Chinese side on 20th December. Building on the progress made after the last meeting on 17th July, the two sides exchanged views on the resolution of the relevant issues along the LAC in the Western sector in an open and constructive manner. There a frank and in-depth discussion, keeping in line with the guidance provided by the state leaders to work for the resolution of the remaining issues at the earliest, which would help in restoration of peace and tranquility along the LAC in the Western sector and enable progress in bilateral relations. In the interim, the two sides agreed to maintain the security and stability on the ground in the Western sector. The two sides agreed to stay in close contact and maintain dialogue through military and diplomatic channels and work out a mutually acceptable resolution of the remaining issues at the earliest. That was our joint press release that has just been issued by from both sides. भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक की 17वें दौर के 20 दिसंबर को हुआ था. चुशुल मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर चीनी भाग में आयोजित किया गया था. 17 जुलाई को पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति पर आधार पर दोनों पक्ष ने खुले और रचनात्मक तरीके से पश्चिमी सेक्टर में LAC के साथ रेलेवेंट मुद्दों के समाधान पर विचारों का आदान प्रदान किया. उन्होंने शेष मुद्दों को जल्द से जल्द समाधान के लिए काम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप एक स्पष्ट और गहन चर्चा की, जो पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शांति और स्थिरता की बहाली में मदद करेगा और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सक्षम करेगा. इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में ज़मीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के सहमत हुए. दोनों पक्षों ने निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत रखने और शेष मुद्दों पर जल्द से जल्द म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन पर काम करना सहमति व्यक्त की. फ्लाइट्स के बारे में ये आपको कोई स्पेसिफिक दूसरे डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन से पूछना पड़ेगा. इस पर चर्चा हो रही है. हेल्थ मिनिस्ट्री नॉर्मली या सिविल एविएशन ये इस पर लीड एजेंसीज हैं. हमारी तरफ अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जैसा आप जानते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स तो है नहीं और इनडायरेक्ट फ्लाइट्स पे ऐसी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है कि कोई हमें कोई स्पेशल अनाउंसमेंट है. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चाइना की जो स्थिति है वहाँ कोविड के वहाँ पे हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं. हमने पहले भी कहा था कि हमारी उम्मीद ये है कि पूरी मानवता कोविड महामारी के पूर्ण रूप से उभर कर सक्षम रूप से ऊपर कर निकले. और हमने हमेशा हमारी तरफ से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हमने मदद की है दूसरे देशों को. और चाइना में जो हो रहा है मैंने जैसे कहा हम करीब से नज़र बनाए रखे हुए हैं और ट्रैवल रेगुलेशंस में अगर कोई अपडेट हो बताएंगे. और एडवाइजरी की भी हमारी तरफ से भी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है. हमारी अपेक्षा यही रही कि जो भी कोई रहता है किसी देश में वहाँ के हेल्थ गाइडलाइंस जो भी हो उनको वो पूरी तरह मानकर चले. जैसे हमारे देश में जो फॉरेनर्स है वो हमारे हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इसी तरह दूसरे देशों में जब लोग रहते हैं उनकी जो लोकल हेल्थ गाइडलाइंस है जो फॉरेनर्स वहाँ रहते हैं इंडियंस वो उसको फॉलो करेंगे. बट कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन हमारी तरफ से अभी इशू नहीं किया है हमने. Moving on to your core command. Look, if you're talking about the incident at Tawang, I think Raksha Mantri ji made a detailed statement in both House of Parliament, and with Parliament in session, it would not be appropriate to say anything beyond that. I don't have any further information to share. So Hasini, you mentioned on an MOU. Look, we have seen reports on this. To be honest, let me just give you a sense of this. Different states do make trips abroad to promote investment and other activities through their states. They do sign MOUs, and these are done directly by the states. Our embassies and consulates extend whatever necessary assistance is required. I don't have anything particular on this MOU or this visit. Yes, our consulate, of course, extended assistance to the delegation, but the MOUs for that, you will have to ask the state government. They would have a better fix on that. I'm not even sure the query regarding, you said due diligence. I'm not sure, it's not our MOU, so I would refer you to the state government. I think they may already made some statements and I would refer you to that. Look, we have noted with concern the reports in this regard. India has consistently supported the cause of female education, women's education in Afghanistan.
We have emphasized, and we've been emphasizing, the importance of the establishment of an inclusive and representative government that respects the rights of all Afghans and ensures the equal rights of women and girls to participate in all aspects of Afghan society, including access to higher education. I would also like to recall UN Security Council Resolution 2593, which reaffirms the importance of upholding human rights, including those of women. And that resolution also calls for full, equal, and meaningful participation of women. I think my answer would also cover your other query related to, you mentioned a public execution in the context of human rights, and what 2593 are other statements that we have been making, as well as part of other groupings that have issued declarations. Yeshi, on the issue of 8 Indians who have been in Qatar, we have been responding on this off and on, depending on what the queries are. I don't have a particular update this week. We remain seized of the matter. I know our embassy, I spoke to them, is actively pursuing the case. As I mentioned, I think last time, the detained Indians are able to speak to their families on a regular basis, I understand. And some of the families who are staying in Doha are being allowed to have physical meetings too. We will continue to extend all possible consular assistance. We are in touch with the families. We are also pushing for further consular access to those individuals. But beyond that, I don't have anything to add except to say that yes, this is a case that we are following closely and pursuing. देखिए, इसमें जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं उनको हम कंसर्न के साथ नोट करते हैं. भारत ने अफगानिस्तान में महिला शिक्षा के मुद्दे को लगातार समर्थन किया है. हमने एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का स्थापना को महत्व पर जोर दिया है, जो सभी अफगानों को अधिकारों का सम्मान करती है और उच्च शिक्षा तक एक्सेस सहित अफगान समाज के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए महिलाओं और लड़कियों के समान अधिकारों का सुनिश्चित करती है. इसी कॉन्टेक्स्ट में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 का भी याद करूंगा, जो महिलाओं और मानव अधिकारों के महत्व की पुष्टि करता है और महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी का भी आह्वान करता है. देखिए, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. मैंने आपको अभी 17वें कोर कमांडर लेवल मीटिंग के बारे में जिक्र किया, उनके बारे में बताया, उसका रीड आउट क्या था. एसआर लेवल टॉक्स का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, उनका एक गाइडेंस रहता है, वो हाईएस्ट लेवल पे रहता है. इनफैक्ट अब क्यों नहीं हुआ इसमें मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, नहीं हो पाई है, ना मेरे पास डेट है, पर डिफंक्ट मैं नहीं मानूंगा. जब आवश्यक रहेगी या टाइम रहेगा या दोनों तरफ से उनके दोनों के साइड से एग्रीमेंट होगी तो अगला राउंड होगा एसआर लेवल टॉक्स का. 2003 से जैसे आपने कहा हो रही है, तो डिफंक्ट कहना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर लेवल का अपना ऑब्जेक्टिव होता है. कोर कमांडर लेवल का एक कोर के बारे में डिस्कशन होता है. इनफैक्ट किसी ने मुझे पूछा था अभी वेस्टर्न साइड में हो रहा है तो तवांग की बात हुई थी या नहीं, बट हर लेवल पे डिफरेंट होता है. ये बाउंड्री इश्यूज के रिलेटेड है और कोर कमांडर लेवल बाउंड्री इश्यूज पे नहीं है, तो हर चीज़ का अपना एक ऑब्जेक्टिव रहता है. मनीष, यू हैड आस्क्ड रिगार्डिंग आर वी इन टच विद द यूएस साइड एट ऑल ऑन look, I don't know what you have in mind on Tawang. As I repeat third time, Raksha Mantri ji has made a comprehensive statement in Parliament. I have nothing further to add. Our privileged communications with foreign leaders or foreign countries, I have nothing particular to share. I'm not even sure what we will raise with the US side vis-a-vis this development. And on the China COVID issue, again, I'm not sure. This is a health emergency. I'm not sure what you would like us to take with the Chinese authorities. Our embassy, of course, is monitoring developments, and we have Indian citizens there. But as I said, we expect citizens, when they're in a foreign country, will follow the health guidelines of that country. So it's not a foreign policy issue as such. There was a related part, I think you asked, Ishi, on, look, if there are new guidelines that come in on what are the restrictions, if any, on particular regions or particular geographies, then that will be applicable to all those people. So I don't know whether it'll be G20 specific or not. As of now, I don't have any information on any additional guidelines or restrictions on entry into India. And this is anyway done by health authorities and civil aviation and other agencies, so I don't think we are the lead on this. And on the issue that I think you asked regarding statements, I think, look, we have made our position quite clear on that statement of uncivilized outburst.
Separately on conversations, look, both countries have their own missions in that country. So to say there will be no conversations or will conversations become difficult, I don't know what you had in mind. And I don't think I have an immediate comment on that. We have always said, talks are predicated upon conducive environment as well as a stop to terrorism. So I don't think that has changed much. I think we'll stop. And when we have a decision on when the dates of the SU and the invitations, we will let you know how that works out. Thank you. I think I'll have to stop here on that. Thank you.